जय गुरु। Jai Guruji, auntie, you unmute. Can you, sorry, you're mute. Can you unmute yourself, please? Yeah, sure. Okay. I got so engrossed. I'm sorry, I just forgot to unmute. Okay. जय गुरुजी संगत जी, सबको बहुत प्यार भरा नमन। कल जैसे हमने पढ़ा था कि surrender is very important. It is one of the finest methods in spiritualism. Easier said than done, but yes, surrender is very, very important. As we read, self-surrender is the highest and easiest method for enlightenment. और जो surrender करते हैं ना, उनको divine protection जरूर मिलती है। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्वामी जी को जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है लेंसडाउन, वो स्वामी जी को बहुत पसंद है। वहां पर कैसे शिवा टेम्पल है, और स्वामी जी का वहां पर एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, ही वाज अबाउट टू फॉल एंड सडनली अ टॉल एंड ओल्ड मैन अपीयर्ड ड्रेस्ड इन व्हाइट। तो कैसे उन्होंने अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन दी स्वामी जी को। वहां के लोगों की मान्यता थी कि चाहे उन्होंने देखा नहीं था विलेजर्स ने, बट दे ऑलवेज फेल्ट कि नहीं, एक डिवाइन प्रोटेक्शन वहां पर होती है जो आने वाले यात्रियों को या कोई मुसीबत में होते हैं तो उनकी रक्षा करती है। इसी तरह की डिवाइन हेल्प स्वामी रामा जी को मिली, जिनको लोगों ने नाम सिद्धा बाबा रखा था उनका। और उसके बाद हमने जो शिवा टेम्पल के बारे में भी पढ़ा, हाईली स्पिरिचुअल प्लेस, और उनको लोगों को लगता था कि सिद्धा बाबा 600 साल पहले रहते थे, और he was the one who guided people and instructed them, but most of the time he would remain in silence. पर जैसे ही उन्होंने शारीरिक चोला छोड़ा, तो वहां पर 6 फुट स्क्वायर का टेम्पल बना जहां पर वो रहते थे। और उसके बाद वहां पर जैसे शिवलिंग हुआ, वी नो दैट शिवलिंग इज सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। और उस टेम्पल की इतनी मान्यता होगी कि हर जो विलेजेस थे वो वहां पर जाते थे, एंड दे वुड विजिट टेम्पल वंस इन 3 मंथ्स, ताकि जो उनकी यादगार है सिद्धा बाबा की वो वहां पर याद रहे, मतलब लोगों तक हमेशा उनके दिल में उनकी एक मीठी याद बन के रही। और जब वहां पर उन्होंने सोचा कि जैसे इंजीनियर ने कंस्ट्रक्शन वगैरह की जाए, बट उनके ड्रीम में आए ओल्ड योगी, एंड वी आर श्योर दैट वो सिद्धा बाबा ही होंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बहुत सीक्रेट प्लेस है एंड इट शुड नॉट बी मूव्ड एंड द टेम्पल शुड नॉट बी इनलार्ज। तो कहते वही पुराना जो टेम्पल है रीबिल्ड किया गया, बट एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ, which it had, the way it had stood for 6 centuries. और इस तरह से फिर हमने पढ़ा कि विलेज जननगंज के बारे में बताया गया, और किस तरह फिर स्वामी जी माउंट कैलाश भी गए, 4 रिनंसिएट्स के साथ। पर कुछ ऐसा जैसे कोई नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, या फिर उनके जैसे बहुत सारी बर्फबारी के कारण उनको जैसे प्रॉब्लम्स होने लगी, बट फिर भी वो स्वामी जी ने इतनी मुसीबतों में भी उन्होंने अपना ह्यूमर कायम रखा, because he said that humor is an important quality, that makes one cheerful in all walks of life, and it's very important quality that everybody should cultivate. पर अंत में क्या हुआ कि आगे जाके they didn't want to go further. पर उससे पहले भी ऐसे हुआ कि सडनली वो बाबा आए, लॉन्ग बियर्ड वाले, व्हाइट रोब पहने हुए, उन्होंने इनको रास्ता दिखाया कि क्या तुम गुम हो गए हो, तो उन्होंने रास्ता दिखाया। और उसके बाद मतलब इतने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जैसे उनके विलेजर्स ने भी कहा कि ये लैंड ऑफ देवास है, यहाँ होते रहते हैं। एंड those 4 renunciates, they backed out, but Swamiji didn't. He just kept on moving, और उसके बाद हमने लैंड ऑफ हमसास के बारे में भी पढ़ा कि स्वामी जी कहते I have found none more fascinating than Gangotri. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरह से कृष्णा आश्रम वाले जो स्वामी जी थे, तो वो किस तरह से एक ही ध्यान ऊपर लगाए बैठे रहते थे, जहां वहां पर एवलांच भी आया तो he didn't get frightened, he didn't get scared, because he had full faith and कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी
केव को कुछ नहीं हो सकता, और उनकी जो आंखें इस तरह से चमकती थी और उनकी स्किन कैसे थी, जैसे थिक एलिफेंट की स्किन होती है। स्वामी जी कहते वो 80 साल के थे, बट फिर भी ही वॉज वेरी हिल एंड हार्टी। और उस तरह से फिर हमने वो भी पढ़ा, जो एथेस्टिक स्वामी थे, जो नास्तिक थे, और किस तरह से स्वामी जी के अफर्मेशंस के कारण, स्वामी जी की डिवोशन और डिटर्मिनेशन के कारण वो नास्तिक आस्तिक बन गए, और बिल्कुल कंप्लीटली उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। क्योंकि स्वामी जी चाहते थे कि कुछ तरह का इस तरह हो जाए कि इस रास्ते में आ जाए, बिकॉज स्वामी जी वॉज वेरी एनामर्ड बाय हिज नॉलेज एंड हिज फिलॉसफी। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद हमें पता है कि स्नो स्टॉप हो गई थी और सूर्य देवता आ गए थे अपने प्रकाश लेकर। और बिकॉज स्वामी जी का ये था कि अगर ईश्वर चाहता है तो हम बिल्कुल रहेंगे। और फिर इस तरह से हमने लास्ट में जो पढ़ा था, दैट वाज स्वामी जी's अपॉइंटमेंट विद डेथ। तो जो प्रिडिक्शन थी उनके मास्टर ने, कैसे वो रॉन्ग कर दी। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि डेफिनेटली जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, कोई संसार में थी मतलब बहुत कम है जो बिल्कुल थॉरो नॉलेज है और जो बिल्कुल जेन्युइन है। और उन्होंने जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि स्वामी जी 28 साल तक जिएंगे, बट यस, his master gave his years to him by it just proved to make his life long, और कैसे उनकी लाइफ इंक्रीज होगी। अदरवाइज द वे स्वामी जी had fallen, और जिस तरह से वो चीज, इतनी तीखी चीज उनके एब्डोमेन में गई, he wouldn't have been alive. So it was just his master's grace, that he could clear this deadly thing, otherwise he wouldn't have been alive. तो जैसे उनके मास्टर अपीयर हुए, उन्होंने बोला, नो, you don't have to worry, nothing is going to happen to you. So पर उन्होंने बोला, भूलना मत, तुम्हारी प्रेडिक्शन की डेट यही थी ना, डेथ की। So you need face death no more today. So अब के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो, पर इस चीज को भूलना मत। तो स्वामी जी कहते हैं यही है ना जेन्युइन मास्टर का सेल्फलेस प्यार क्या होता है। आई थिंक इट्स one of the best relationships a master and disciple can ever have. It's the highest and the purest of all, which cannot be put into words. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है powers of the mind. स्वामी जी कहते हैं the mind is a reservoir for numerous powers. कहते हैं by utilizing, स्वामी जी कहते हैं, by utilizing the resources which are hidden within it, one can attain any height of success in the world. If the mind is trained, made one pointed and inward, it also has power to penetrate into deeper levels of our being. It is the finest instrument that a human being can ever have. वो तो है ही है। Mind कहते क्या है? Our life is shaped by our mind, our thoughts, and what we become, what we think. Mind is very, very, very powerful. सब कुछ माइंड ही तो है। आप जैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर देंगे ना, वैसे ही चीजें होने लगेंगी। और कहते हैं ये सबसे फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान के पास है, जो एक कुदरत का गिफ्ट है। कहते लेसन्स ऑन द सैंड्स, इस चैप्टर का नाम है। स्वामी जी कहते इफ यू लुक एट समवन विद फुल अटेंशन बाय फोकसिंग योर कॉन्शियस माइंड, इट कैन इमीडिएटली इन्फ्लुएंस हिम। तो स्वामी जी कहते हैं अगर आप किसी के साथ पूरी अटेंशन के साथ फोकस करके अपने कॉन्शियस माइंड के साथ देखोगे ना, आप उस पर प्रभाव डाल सकते हो। कहते हैं a Swami taught me this when I was young. His name was Chakravarti. He was one of the most eminent mathematicians of India and the author of the book Chakravarti's Mathematics. Later, वो जिनकी वो बात कर रहे हैं ना, चक्रवर्ती जी की, कहते हैं इन्होंने किताब भी लिखी थी, चक्रवर्ती's Mathematics. कहते later he renounced the world to become a Swami. तो स्वामी बनने के लिए उन्होंने ये दुनिया का ये छोड़ दिया, दुनियावी चीजें, और अपना दूसरा पाथ अडॉप्ट कर लिया। कहते ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ अ मास्टर। तो ये चक्रवर्ती भी इनके मास्टर के स्टूडेंट रहे हैं। ही कंटेंटेड दैट गेज, दैट्स कॉल्ड थ्राटक, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर इन्फ्लुएंसिंग एनीथिंग एक्सटर्नल एंड स्ट्रेंथनिंग कंसंट्रेशन। तो कुछ ऐसे त्राटक क्रिया के बारे में बोल रहे हैं जिससे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बाहरी और अंदर की कंसंट्रेशंस को भी आप मजबूत कर सकते हैं। When the mind is focused externally on some object, it is called gaze. Okay, जब आप बाहर की तरफ से आप किसी ऑब्जेक्ट को गेज करते हैं, इसको गेज देखते हैं, तो उसको गेज ही कहा जाता है। और जब इंटरनली फोकस करते हैं तो concentration कहा जाता है। When the mind is focused externally on some object, it's called gaze. When it is focused internally, it's called concentration. The power of a focused mind is immense. There are various methods of gazing, each of which gives a different power to the human mind.
One may gaze at the space between the two eyebrows, the bridge between the two nostrils, a candle light in dark room, the early morning sun or the moon. तो ये अलग अलग तरीके से अपना गेजिंग का बता रहे हैं ना. चाहे तो आप अपने आपके जो आईब्रोज हैं उनके बीच में आप देख के गेज मतलब ध्यान लगाओ, या आपका जो ब्रिज है नॉस्ट्रल्स के बीच में, या एक मोमबत्ती जलाकर डार्क रूम में, या सुबह का सूरज को देख के, और मून. कहते but certain precautions must be observed or one can injure himself both physically and mentally. कहते thought power is known all over the world. A one-pointed mind can do wonders, but when we direct it toward when we direct it toward worldly gains, we're caught in the whirlpool of selfish desires. वो तो है ही है. कहते हम सबको पता ही है थॉट में कितनी पावर होती है. और अगर आप एक चीज को वन पॉइंटेड माइंड से आप कंसंट्रेट करेंगे ना, तो उसमें बहुत शक्ति है. पर अगर आप दुनियावी चीजों पे करेंगे तो ऑब्वियसली देन यू गोना इट्स लाइक अ क्विक सैंड. कहते मेनी ऑन द पाथ become victims of the temptations of acquiring siddhis, forgetting the real goal or attaining serenity, tranquility and self-realization. ये बिल्कुल ठीक कहा है कि जो इस पाथ पे होते हैं इतनी टेम्पटेशंस आ जाती है ना कि नहीं हमें रिद्धि सिद्धियां मिले, तो जो उनका अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट उनका जो मकसद है ना स्पिरिचुअलिज्म का, वो क्या है? पीस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन करना, उससे वो एस्ट्रे हो जाते हैं. They deviate from the path. So the one day the Swami said to me, today I'm going to show you something. Go to the court and find a person who is being persecuted unjustly. So उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हें कुछ अपनी शक्ति का जो भी है प्रमाण देता हूँ. कोर्ट में जाओ और एक बंदा ऐसे लो जो गलत तरीके से जिस पे persecution चल रहा है. So I asked one of the lawyers, can you tell me of anyone who's being tried unjustly in this court? He said, yes, I have such a case. I went back and Swamiji said, okay, this man will be acquitted. Ye chhoot jayega. And I will now tell you word for word the judgment that will be handed down. कहते मैं तुम्हें शब्द और एक एक चीज बताऊंगा जिस तरह से जजमेंट होगी. एक एक चीज बताऊंगा कैसी होने वाली है. कहते he dictated the judgment to me, although he was not a lawyer. He said, I have made 3 mistakes purposefully. वो कहते हैं deliberately मैंने 3 गलतियां की हैं. कहते the judgment will be exactly like my dictation and it would also have 3 mistakes. I typed up his dictation. तो स्वामी जी ने जो वो बता रहे थे ना, तो चक्रवर्ती जी, तो स्वामी जी ने बिल्कुल वैसे ही टाइप करना शुरू कर दिया. When the judgment was later handed down, every word, comma and period was exactly the same as what had been dictated to me. कहते जब judgment it was handed down to me ना, तो exactly बिल्कुल same थी. कहते he said, उन्होंने कहा, okay, compare my dictation with the judgment and you'll find that the same 2 commas and 1 period are missing. कहते जो मैंने मिस्टेक की थी ना वो ही उसमें है जजमेंट में. तो इस तरह से चक्रवर्ती जी ने इन्फ्लुएंस किया होगा ना. कहते the dictation perfectly matched the judgment. I said, Swami ji, you can change the course of the world. अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप तो पूरी दुनिया बदल सकते हो. He said, I don't claim to do that. That's not my purpose. I'm demonstrating this so that you can understand how a man can influence the mind of another from part of the world if it is for a good reason. कहते मेरा पर्पस ये नहीं है. मैं तुम्हें इसलिए अपना डेमोन्स्ट्रेट करके, इसलिए एग्जिबिट करके बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है आपको फिजिकली वहां बैठे होना चाहिए जिसको अपने माइंड चेंज करना. आप कहीं भी बैठ के आप किसी का माइंड चेंज कर सकते हो, बशर्ते वो एक अच्छी चीज के लिए हो. कि दे हेल्पिंग अदर्स इज पॉसिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस. ये बहुत अच्छा स्वामी जी ने सिखाया है कि यस, जो उनके वो है चक्रवर्ती जी, कहीं भी चाहे दूर भी हो ना, आप किस इंटेंशन से या किसी का जिस तरह से भी, अब ऑफ कोर्स उन्होंने तो बहुत वो फोकस किया होगा, कंसंट्रेशन किया होगा, अपनी पावर्स इस तरह से जो भी अटेन की. कहते आप किसी की भी मदद कर सकते हो चाहे आप दूर क्यों ना बैठे हो. I asked him to give me the secret of this power. He said, I'll give you the secret, but you won't want to practice it. I did practice the method for some time and it helped me. But later I discontinued it because it was distracting and time consuming. तो जो भी उसका तरीका होगा प्रैक्टिस करने का स्वामी जी ने किया, स्वामी रामा जी ने, पर कहते नहीं मुझे बीच में छोड़ दिया बिकॉज मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगा और मुझे लगा कि नहीं इसमें बहुत समय लग रहा है. The Swami was very kind and also taught me philosophy through mathematics. Every digit was explained with verses from the Upanishads. From 0 to 100, he explained the philosophical meaning of the science of mathematics.
कहते mathematics has the digit 1, all other digits are multiples of the same 1. Similarly, there is only one absolute reality. कहते जैसे मैथमेटिक्स में एक डिजिट है ना, बाकी सब डिजिट तो मल्टीपल है ना 1 के. कहते इसी तरह एक ही absolute reality, and that's God Almighty, and all the names and forms of the universe are multiple manifestations of that one. So beautifully described कि एक absolute reality है और बाकी जो नाम है और forms है ना यूनिवर्स के, वो क्या है? वो तो मल्टीपल मैनिफेस्टेशन है उस एक के. कहते हैं जैसे हम कहते हैं ना, गुरुजी तो मूल हैं, बाकी सब तो शाखाएं हैं. एक मूल को सींचने से शाखाएं भी उनका भी जैसे भी है उनको भी नर्चर होती रहती हैं. Okay, कहते drawing lines on the sand of the Ganges with his staff, he made a triangle and taught me how life should be an equilateral triangle. तो उन्होंने demonstrate करके बताया triangle की shape में. कहते the angle of the body, the angle of internal states, and the angle of the external world make up the equilateral triangle of life. तो जिस तरह का body का angle होता है, internal state का होता है, बाहरी दुनिया का होता है, ये सब it constitutes to that equilateral triangle of life. As all numbers are the outcome of point which cannot be measured, similarly, this whole universe has come out of an unmeasurable void. The life is like a wheel, which he compared with the circle or zero. The circle is an expansion of the point. He used another analogy. There are WO points called death and birth, and life here is a line between the two. Okay, the unknown part of life is an infinite line. तो वो अपनी जो मैथमेटिक्स की भाषा में है ना, तो वो सारे देखो इतनी बहुत deep चीजें he's explaining in a very very simple manner. कहते हैं my repulsion towards the study of mathematics was dispelled. तो स्वामी जी कहते इस तरह से वो describe कर रहे थे, तो मुझे जिस तरह से मतलब स्वामी जी never liked mathematics and he kind of detested it, but he developed Swamiji's interest in this particular subject. After that, I began studying mathematics with considerable interest. I learned that mathematics is a positive science, which is the very basis of all sciences, but it is itself based on the exact science of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is the most ancient philosophy of knowing the body, its components, and various functions of the mind. Yoga is a practical science which leads one to the superconscious state. Through understanding Sankhya, all philosophical questions arising in my mind were solved easily, and then I understood the scriptures properly. The last day of his teaching was enchanting. He said, now make a zero first. तो उन्होंने स्वामी जी को बोला zero बनाओ, then put one afterwards. पहले zero बनाओ और उसके बाद one लिखो. कहते every zero has a value. बहुत अच्छा समझाया. कहते every zero has a value if one is put if the one is put first, but zero has no value if the one is not put first. तो बिल्कुल ठीक है. एक को पहले लगा दो, जीरो से तो कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, बट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इफ द वन इज नॉट पुट फर्स्ट. अगर जीरो से पहले वन ना लगाए जो तो क्या वैल्यू है जीरो की. कहते ऑल द थिंग्स ऑफ द world are like zeros, and without being conscious of the one reality they have no value at all. इतना खूबसूरती से समझाया है. कहते दुनिया क्या है, ये सारी चीजें क्या है, जीरो ही तो हैं. पर वो जो एक रियलिटी है ना ईश्वर की, वन रियलिटी, जब वो जीरो के आगे लग जाती है तो उसकी कीमत देखो कितनी बढ़ जाती है. कहते when we remember the one reality then life becomes worthwhile, otherwise it's burdensome. कहते the Swami left for the deep Himalayas and I never met him again. I'm grateful to those teachers who spend their valuable time in teaching me. तो ये बहुत अच्छी बात है. स्वामी जी कहते कि मैं कितना आभारी हूं इन टीचर्स का जिन्होंने इतने प्रेशियस मोमेंट मुझे दिए और मुझे कितने कितने डीप सीक्रेट सिखाया. हर स्वामी का कोई ना कोई प्रभाव रहा है स्वामी रामा जी पे. कहते ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मैटर. स्वामी जी कहते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर है, कहते in 1942 I started on a journey to Badrinath, the famous Himalayan shrine. On the way there is a place called Srinagar which is situated on the bank of the Ganges. कहते 5 miles from Srinagar there is a small Shakti temple, and just 2 miles below that was the cave of an Aghori Baba. तो ये घोरी बाबा जी के बारे में बता रहे हैं. We know that Aghori Babas, they indulge in necrophilia and posthumous rituals. इस तरह के rituals होते हैं. कहते हैं, okay, Aghori Baba.
5 miles from Srinagar, there is a small Shakti temple, and just 2 miles below was that cave of an Aghori Baba. Kehte Aghori is very mysterious study, which is rarely mentioned in books and hardly understood even by the yogis and swamis of India. It's an esoteric path involving solar science and is used for healing. Kehte the science is devoted to understanding and mastering of finer forces of life, finer than prana. It creates a bridge between life here and hereafter. There are very few yogis who practice the Gori science, and those who do are shunned by most people because of their strange ways. The Gori Babas, वैसे भी they look very frightful, I believe. तो उनकी ऐसी practices होती हैं which are so bizarre, and some really indulgent, spooky kind of things also. The villagers in the area around Srinagar were very much afraid of the Ghori Baba. They never went near him because whenever anyone had approached him in the past, he called them names and threw pebbles at them. Look at the villagers, they used to keep him at bay, at distance. Why? Because, whenever anybody would just come near to him, he would just call names, he would use cuss words, or wo pebbles unke upar फेंकते थे. कहते he was about 6 feet 5 inches tall, so gigantic. कहते he was about 6 feet 5 inches tall and very strongly built. He was kind of a hefty kind of guy. कहते he was about 75 years of age. He had long hair and a beard and wore a loincloth made of jute. He had nothing in his cave except a few pieces of gunny sack. तो ऐसे डिस्क्रिप्शन बताइए घोरी बाबा जी की. कहते I went to see him, Swami ji कहते I went to see him thinking that I would pass the night there and learn something from him. I asked a local pandit to show me the way. The pandit said, this Aghori is no sage. ये कोई साधु महात्मा नहीं है. He's dirty. वो pandit जी कहते no, he's filthy. You don't want to see him. But the pandit knew much about my master and me, and I persuaded him to take me to Baba's cave. तो हमें पता है ये स्वामी रामा जी जो एक बारी कुछ ठान लेते हैं, then he just kind of, finishes whatever comes in his mind. He doesn't leave it halfway. So वो उन्होंने पूरा मन बना लिया. So he kind of persuaded him कि नहीं मुझे तो जाना है. कहते we arrived in the evening just before dark. We found the Ghori sitting on the rock between the Ganges and his cave. He asked us to sit beside him. Then he confronted the Pandit, saying, behind my back you call me names, and yet you greet me with folded hands. The Pandit wanted to leave, but the Ghori said, no, go to the river and fetch me a pot of water. तो कहते तुम उस पंडित को बोला कि उधर नदी पे जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ. When the frightened pandit came back with the water, the Ghori handed to him a cleaver and said, तो हाथ में cleaver वो काटने वाला पकड़ा हुआ था. कहते there is a dead body which is floating in the river. Pull it ashore, chop off the thigh and calf muscles, and bring a few pounds of flesh to me. तो घोरी बाबा की practices इन लोगों के तो normal होती हैं. तो बेचारा पंडित तो वहां आके फंस गया. तो कहते भाई जाओ, अभी जो डेड बॉडी फ्लोट कर रही है इसको लेके आओ. तो उसको काटो थाई से, काफ मसल से, एंड जो भी फ्लैश जितना भी उन्होंने बोला मेरे लिए लेके आओ. कहते the Ghori's demand shook the Pandit, and Pandit started trembling. He became very nervous, and so did I. तो ये सुन के स्वामी जी also became so perplexed, nervous, and he had that butterflies in stomach. Okay, then he became very nervous, and so did I. He was extremely frightened and didn't want to carry out the Ghori's wishes, but the Ghori became fierce and shouted at him, saying, either you will bring the flesh from the dead body, or I will chop you and take your flesh. Which do you prefer? So that Ghori Baba, he kind of threatened him. इतना intimidate कर दिया, या तो तुम लेके आओ, नहीं तो I'm gonna just cut you and chop you and take your flesh. So which do you prefer? Of course, poor Pandit और क्या करता, out of deep anxiety and fear, went to the dead body and started cutting it up because he had no way out. He thought, otherwise I'm gonna die, so it's better if I just go and get the flesh off that dead body. He was so upset that he also accidentally cut the first and second fingers of his left hand, and they started bleeding profusely. Oh my God, he was so upset. I mean, in that process, उसने अपनी भी fingers दो काट दी. And obviously the blood started gushing out. That poor guy, he was frozen to death, and he was scared to death. And he became so oblivious that he didn't notice that he had cut his fingers as well in that process. He brought the flesh to the Baba. Neither the Pandit nor I were then in our, neither the Pandit nor I were
than in our normal senses. Obviously, इतना कुछ देख के, इतनी खूंखार चीजें देख के कहते हम तो अपने senses में ही नहीं थे, ना पंडित ना मैं. So when the Pandit came near, the Gori touched the cuts on his fingers and they were healed instantly. There was not even a scar. तो वो power देखिए, जो भी रिद्धि सिद्धि उनके पास होंगी. गोरी बाबा जी ने जैसे ही उनकी जो फिंगर स्लिट हुई थी वहां पर उन्होंने टच किया, I mean, it's like in no time they were healed. There was not even a scar. Sorry, the Aghori ordered him to put the pieces of flesh into an earthen pot. मिट्टी के पॉट में उन्होंने बोला, गौरी बाबा ने कि जो पीसेस है ना फ्लैश के उसमें डालो. To put the pot on the fire and to cover the lid with the stone. He said, don't you know this young Swami is hungry and you also have to eat? We both said, sir, we are vegetarians and you are planning to give us this feast, of flesh. The Baba was irritated by this and said to me, do you think I eat meat? तो बाबा बहुत irritate हो गए, got irked. तो कहते तुम्हें क्या लगता है मैं मीट खाता हूँ? Do you agree with the people here that I'm dirty? कहते वो बाबा कहता, घोरी बाबा मैं भी pure vegetarian हूँ. You people have wrong notions, because you people think I'm dirty and I also would be eating, this flesh and all that. But no, I'm pure vegetarian. But after 10 minutes had passed, he told the Pandits to bring him the earthen pot. He gathered a few large leaves and said, spread these on the ground to serve the food on. तो जैसे ही वो खाना पक के जो भी है उनका फ्लैश का तैयार हो गया, उन्होंने बोला ये पत्ते लार्ज लीव्स को एज ए प्लेट की तरह उसको सर्व करो. और वो it's like lay the table and then put the food on. The Pandit with trembling hands did so. Then the Ghori went inside the cave to fetch 3 earthen bowls. While he was gone, the Pandit whispered to me, I don't think I will live through this. This is against everything that I've learned and practiced all my life. Obviously Pandit ने ये चीजें कहाँ की होंगी. वो तो कह रहा सोच रहा होगा कि मेरा तो सारा कुछ ही जितना भी मैंने पुण्य कमाया मेरा खत्म हो गया, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया है. वो कहता है I should commit suicide. What have you done to me? Why did you bring me here? I said be quiet. तो स्वामी रामा जी ने कहा hush, उसको कर दिया कि just be quiet and you zip your lip. We cannot escape, so let us at least see what happens. कहते हैं हमारे पास कुछ चारा तो है, जा तो सकते नहीं है. So what can't be cured should be endured, चलो बैठो हम देखते हैं अभी आगे क्या होता है. The Ghori ordered the Pandit to serve the food, and when the Pandit took the lid off the pot and began filling my bowl, we were astonished to find a sweet rasgulla, which is made from cheese and sugar. So what a surprising thing. हम वो सोच रहे थे फ्लैश पक रहा है हमें खाना पड़ेगा, it's like a do or die situation. But to their amazement, oh my God, तो जब उन्होंने खोला उसमें से रसगुल्ला निकला. तो रसगुल्ला we know it's made of cheese and sugar. ये तो स्वामी जी की one of the favorite dishes रही हैं. स्वामी जी कहते हैं oh this was my favorite dish and I had been thinking of it as I was walking to the Baba's cave. तो ये जो घोरी बाबा जी थे हमने देख लिया उनमें ये भी शक्ति थी, कोई कटकुट लग जाए तो वो उनके टच से हील हो गया. और उनको पहले ही मन में पता लग गया था कि स्वामी रामा जी had that craving of eating this rasgulla. I thought it was all very strange. The Gori said the sweet has no meat in it. So he's kind of hilarious kind of guy that Gori Baba कहते sweet में कोई meat नहीं है. I ate the sweet and the Pandit had to eat it too. It was very delicious. What was left over was given to the Pandit to distribute among the villagers. So, both these guys, they found it so scrumptious. तो जो उसमें से प्रसाद जो रसगुल्ला बच के उन्होंने villagers में बांट दिया. This was done to prove that we had not been fooled by means of a hypnotic technique. All alone in the darkness, the Pandit left for his village, which was 3 miles away from the cave. I preferred to stay with the Aghori to solve the mystery of how the food was transformed and to understand his bewildering way of living. तो पंडित तो निकल पड़े, but Swami ji has always been very, very courageous and valiant. और उनको तो वो तो कोई भी चीज होती थी उसके तह तक जाते थे कि नहीं मुझे जानना है, कि किस तरह से इन्होंने खाने को ट्रांसफॉर्म कर दिया from flesh to rasgulla and मैं देखना चाहता हूँ ये किस तरह रहते हैं. Why was the flesh of a dead body cooked and how could it turn into sweets? Why does it live here all alone? I wondered. I heard about such people, but this was my first chance to meet one in person.
स्वामी जी कहते हैं मैंने ऐसे लोगों का सुना जरूर है, पर ये मेरे पास गोल्डन चांस था, आई डोंट वांट टू लेट इट गो, क्योंकि ये मेरा पहला चांस था इस तरह के इंसान को मिलने का, इस तरह के बाबा को मिलने का. After I meditated for 2 hours, we began talking about the scriptures. He was extraordinarily intelligent and well read. His Sanskrit, however, was so terse and tough that each time he spoke, it took a few minutes to decipher what he was saying before I could answer him. So Swami Ramaji ko unko, Swami Ramaji, would got really captivated by his intelligence. And स्वामी जी कहते जिस तरह से वो संस्कृत भाषा बोल रहे थे ना, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता था उसका मीनिंग मतलब ढूंढने में और मतलब समझने में. Okay. He was no doubt a very learned man, but his way was different from any other sadhu that I had ever met. Aghor is a path which had been described in the Artha Veda, but in none of the scriptures have I ever read that human flesh should be eaten. I asked him, why do you live like this, eating the flesh of dead bodies? वो कहते हैं आप ऐसा क्यों रहते हैं, eating the flesh of bodies, dead bodies? But हालांकि उन्होंने तो अभी तो पीछे कहा था कि मैं तो vegetarian हूँ. He replied, why do you call it a dead body? It's no longer human. तुम जिसको dead body कह रहे हो तो dead body होगी. अब वो कोई जीते जाते कोई इंसान की थोड़ी है. कहते हैं हमारे ये सिर्फ matter है अब. It's just matter that is not being used. You are associating it with human beings. No one else will use that body, so I will. जिदा गुरु जी कहते ना इंसान दी तो चमड़ी भी नहीं काम आती, पर ये जो घोरी बाबा जी इन्होंने क्या किया, ये तो घोरी जी कर सकते हैं. कहते हैं इन्होंने क्या कि नहीं, जब किसी के काम तो आनी नहीं बॉडी, तो चलो मैं तो यूज करूं. कहते हैं I'm a scientist doing experiments trying to discover the underlying principles of matter and energy. I'm changing one form of matter to another form of matter. तो ये तो है, कहते उनके लिए तो मैटर ही है ना, उन्होंने उस मैटर को अनदर फॉर्म देके चेंज कर दिया. कहते my teacher is mother nature, she makes many forms and I'm only following her law to change the forms around. I did this for that pandit so that he would warn others to stay away. तो उन्होंने पंडित के लिए ये किया था ताकि वो बाकियों को भी वार्न कर दे, है ना, कि stay away. This is my 13th year at this cave and no one has visited me. कहते मेरा 13वां साल है इस केव में, कोई भी मेरे पास नहीं आया. People are afraid of me because of my appearance, क्योंकि हमने देखा है वो बहुत लंबे ऊंचे चौड़े रहे हैं. And they think I'm dirty and that I live on flesh and dead bodies. I throw pebbles but I never hit anybody. कहते ठीक है मैं pebbles जरूर फेंकता हूँ, but मैंने कभी किसी को hit नहीं किया है. His external behavior was very crude, but he told me that he was behaving that way knowingly so that no one would disturb him as he studied and so that he would not become dependent on the villages for food and other necessities. तो कहते हैं उनका external जो behavior है ना, वो इस तरह का रहा है जान के, deliberately, knowingly, क्योंकि ताकि उनको डिपेंड ना होना पड़े किसी के ऊपर और कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके. कहते he was not imbalanced, but to avoid people he behaved as though he were. His way of living was totally self-dependent, and although he continued to live in that cave for 21 years, no villager ever visited him. Okay. We stayed up through the night and he instructed me, talking the entire time about his Aghor path. उन्होंने अपने path के बारे में सारी रात स्वामी रामा जी को बताया. This path was not for me, but I was curious to know why he lived such a lifestyle and did all that he was doing. स्वामी जी कहते ये मेरा रास्ता नहीं था, ये मेरा path नहीं था, but मेरी जो curiosity थी, I wanted to quench that the thirst of that thing. That's why I had to stay with him and I asked him whole night about his lifestyle and all that. कहते he had the power to transform matter into different forms, like changing a rock into sugar cube. तो देखिए इतनी शक्ति रही योगेंद्र स्वामी अघोरी बाबा में, वो एक मैटर को दूसरी मैटर में चेंज कर सकते थे, एक रॉक को शुगर क्यूब में चेंज कर सकते थे. One after another, the next morning he did many such things. He told me to touch the sand and the grains of sand turns into almonds and cashews. I had heard all these signs before and knew its basic principles, but I had hardly believed such stories. I did not explore this field, but I'm fully acquainted with the governing laws of the signs. At noon, the Aghori insisted that I eat something before leaving. This time he took out a different sweet from the same earthen jar. He was very gentle with me and all the time discussing the Tantra scriptures. He said, "This science is dying. Learned people don't want to practice it, so there will be a time when the knowledge will be forgotten." तो जिस तरह की भी साइंस है ना, कहते ये अब ये उस तरह से उसका नहीं हो रहा, क्योंकि जो
मतलब जो लर्नर लोग हैं ना, जो एजुकेटेड लोग हैं, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। तो कहते हैं एक टाइम ऐसा आएगा, ये विद्या नहीं रहेगी, ये बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। Okay, I asked, what is the use of doing all this? He said, what do you mean by use? This is a science, and a scientist of this knowledge should use it for healing purposes and should tell other sciences that matter can be changed into energy, energy into matter. कहते तुम्हारा क्या मतलब है? ये साइंस है, तो यही तो है ना, मैटर को आप किसी भी एनर्जी में चेंज कर सकते हो, एनर्जी को फिर मैटर में कर सकते हो। कहते द लॉ दैट गवर्न्स मैटर एनर्जी इज वन एंड द सेम, beneath all names and forms there lies one unifying principle which is still not known in its entirely by modern scientists. Vedanta and the ancient sciences describe the underlying principle of life. There is only one life force, and all the forces and names of the universe are but varieties of that one. पर एक लाइफ सोर्स तो एक ही है ना, बाकी तो सब अलग अलग फॉर्म्स हैं। It's not difficult to understand the relationship between two forms of matter because the source is one and the same. When water becomes solid, it's called ice. You know, science maybe padha hai. When water becomes solid, it's called ice. When it starts evaporating, it's called vapor. Young children do not know that these three are forms of the same matter. So ye alag-alag form hai, but matter to ek hi hai na, and that essentially there is no difference in their composition. The difference is only the form it takes. ओके तो वो ही है ना, जब वो सॉलिड हो जाता है तो आइस कहलाता है, इवेपोरेट हो जाता है तो वेपर कहलाता है। कहते हैं the scientists today are like children, they do not realize the unity behind all matter, now the principles for changing it from one form to another. Intellectually I agreed with him, and yet I did not improve of his way of living. So Swamiji कहते yes, definitely I found him quite intelligent, and I do agree with him, but जो उनका तरीका है जीने का, मैं उससे agree नहीं करता. I said goodbye and promised to visit him again, but I never have. I was curious about the fate of the Pandits who had gone to the village the previous night in a state of fear. So when to see him, to my surprise, was completely changed, and I was thinking of following the Ghori and becoming his disciple. तो कहाँ स्वामी जी ने सोचा था, पता नहीं वो पंडित क्या है, क्या उसका हुआ होगा. But it's kind of great surprise. तो पंडित ने सोचा कि नहीं, मुझे तो maybe he got really captivated by his powers of his siddhis and all that. तो पंडित ने सोचा नहीं, मैं भी अब उनका शिष्य बन जाऊंगा. Now next chapter is Where is my donkey? Swamiji कहते हैं, when I stayed in Meo, a small city in Uttar Pradesh, I lived in a small hut which was built for wandering swamis and sadhus. Most of the time I stayed in my room doing my exercises and studying in meditation. I came out just for a short while in the morning and evening. A laundry man used to wash clothes nearby. He had no wife and children, only a donkey. तो laundry man के बारे में बता रहे हैं, कहते उसके ना तो कोई पत्नी ना बच्चे, सिर्फ उसके पास एक गधा था, donkey. One day he lost his donkey. He was so worried that he became stunned and went to a trance. People thought he was in samadhi, क्योंकि वो इतना shock और इतना stunned हो गया ना, तो बिल्कुल trance में ही चला गया. लोगों ने सोचा पता नहीं क्या, शायद इसने कोई समाधि लगा ली है. कहते in India people will do anything in the name of samadhi. They will even sell their homes and offer money to that person who was apparently attained that state. So definitely because people are gullible, तो ऐसा कुछ भी हो तो कुछ भी कर सकते हैं, अपना घर बार भी बेच सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, सब कुछ, जब उनको पता लगता है कि किसी ने somebody has attained that kind of state. They believe that giving gifts is the way to express their love and devotion for a holy man. The laundryman sat in one position for 2 days, and people started placing money, flowers, and fruit all around him, not knowing वो तो बेचारा अपने गधे के गम में ऐसे बैठ गया था. 2 people declared themselves his disciples and began collecting the money. तो बाकी लोगों ने तो फायदा उठा लिया, पूरा 2 लोगों ने तो बिल्कुल ही उसके शिष्य बन के और जो पैसा मिलता था कलेक्ट करने लगे. Started accumulating that, but the laundry man did not stir. वो तो हिला ही नहीं. His followers began encouraging the others to come. They wanted everyone to know that they were the disciples of this great guru. Through word of mouth, he soon became famous. I received information through one of his disciples that there was a great man in Samadhi near the place where I was staying. स्वामी जी कहते जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली ना, तो मैं भी चला गया देखने. There was indeed someone sitting very still with his closed eyes. Many people were sitting around him chanting, "Oh Lord, bring him back. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna." I asked them, "What are you doing?" They said, "He's our guru and he's in samadhi." I became curious and thought, let me see what happens when he comes out of this state. After 2 days, he opened his eyes. Everyone looked on expectantly to hear what profound sermon he would deliver. सबने सोचा कि नहीं,
अब जब आंखें खुली तो हम देखते हैं क्या हमें वो sermon देंगे, क्या preach करेंगे, क्या उपदेश देंगे. But when he came out of the trance, he only said, "Where is my donkey?" The desire with which one goes into meditation is a prime factor. That's a great, great thing. जिस desire पे आप meditation में बैठते हो ना, वो count करता है. कहते when a fool goes into sleep, he comes out of as a fool. But if one does meditation with a single desire for enlightenment, he comes out as a sage. आप meditation में जैसी आपकी सोच होगी, जिस intention से आप बैठेंगे, वही आगे प्रफुल्लित होगी. कहते हैं there is fine distinction between the person who becomes preoccupied and pensive and the aspirant who really meditates. ये फर्क है. एक एस्पिरेंट जो वो एस्पायर किसी और चीज के लिए करता है. कहते इंटेंस वरी कैन ड्राइव द माइंड टुवर्ड वन पॉइंटेडनेस. इतनी ज्यादा भी जब आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं ना, वो भी आपको आपके माइंड को वन पॉइंटेडनेस की तरफ लेके जाएगा. पर किस तरह से? दैट वुड बी इन अ नेगेटिव वे. थ्रू मेडिटेशन द माइंड बिकम्स पॉजिटिव, वन पॉइंटेड एंड इनवर्ड. पर मेडिटेशन का तो लक्ष्य अलग है ना. वो आपको पॉजिटिव बनाते हैं, वन पॉइंटेड बनाते हैं, अंदर की ओर लेके जाते हैं. The outer signs and symptoms are similar. Worry makes the body inert and tense, while meditation makes it relaxed, steady, and still. For meditation, purification of the mind is essential. For worry, it's not needed. When intense worry controls the mind, when intense worry controls the mind becomes inert and insensitive. इतनी ज़्यादा चिंता भी नहीं होती, आपको insensitive बना देती है. But if a great man contemplates on the miseries of the world, it's not worry at all, but a loving and selfless concern for humanity. हाँ, उस तरह के आदमी जब दुनिया की मिजरीज देख के, है ना, जब वो कॉन्टेम्पलेट करता है, अपने पेंसिव मूड में बैठता है, दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि उसमें प्यार है, वो सेल्फलेस कंसर्न होता है इंसानियत के लिए. इन दिस केस द इंडिविजुअल माइंड एक्सपैंड्स एंड यूनाइट्स इटसेल्फ विद द कॉस्मिक वन. When the mind is engrossed in individual interests one-pointedly, it's called worry. When the mind is made aware of the misery of others, it starts contemplating positively. In both cases, mind can become one-pointed. But in the latter case, consciousness is expanded. Of course, meditation में आपकी consciousness बहुत expand होने लग जाती है. When John was put in the example दे रहे हैं, when John was put in the isolated cell on the island of Patmos, he worried because he thought that the message of his master would not reach the masses. But actually, this sort of worry was not for the fulfillment of his own desire. It was a universal issue on which he contemplated and meditated. Meditation is expansion and worry is contraction. तो यही सीखने को मिला. देखो, एक होते ना चिंता दुनिया, मतलब एक होता अपनी लाइफ को लेकर, एक होता जब दुनिया की मिजरीज को लेकर आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं, वो कुछ और है, बिकॉज उसमें आपका कोई सेल्फिश पर्पस नहीं होता ना. और ये बहुत अच्छी लाइन है. मेडिटेशन इज एक्सपेंशन एंड वरी इज कंट्रैक्शन. मेडिटेशन एक्सपैंड करती है, फैलती जाती है, वरी तो कंट्रैक्ट करेगी. कहते हैं ना, जैसे चिंता चिता के समान होती है. The same power that can flow toward negative groups can also voluntarily be directed toward positive groups. Therefore, it's important for a student to purify the mind first and then to meditate. Without a disciplined and purified mind, meditation cannot become helpful in the path of enlightenment. So meditation से पहले अपने mind को purify करना बहुत जरूरी है. कहते prepare करना बहुत जरूरी है. Preparation is important. The preliminary steps, control of action, speech, dietary habits, and other appetites are essential requisites in preparation. तो इसके लिए जिस तरह के आप कर्म करते हैं, speech कैसे बोलते हैं, किस तरह आपका खान पान है, और किस तरह की आपकी other appetites और desires है, ये बहुत जरूरी है इस preparation के लिए. Those who discipline themselves and then meditate receive valid experiences. They come in touch with the positive and powerful potentials. These experiences become guide in fathoming the deeper levels of consciousness. The untrained and impure mind cannot create anything worthwhile, but the meditative and contemplative mind is always creative. Both worry and meditation leave their deeper imprint on the unconscious mind. तो यही है ना, हमें इसमें यही सीखने को मिला है, worry और meditation में क्या फर्क है. The worry creates several psychosomatic diseases, while meditation makes one aware of other dimensions of consciousness. If the aspirant knows how to meditate, he'll naturally be free from his worrying habits. Hatred and worry are two negative powers which control the mind. नफरत और चिंता, ये ऐसी दो चीजें हैं ना, आपके माइंड को पूरा कंट्रोल कर लेती हैं. देखो, जब भी हम चिंता में बैठते हैं ना,
वो चिंता से ये तो कभी नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, बट यस हमें और जरूर कोई बीमारियां लग सकती हैं चिंता से. Chinta, worry is not going to solve, but yes, worshipping will definitely solve the problems because it gives you power, it gives you strength. Meditation and contemplation expand the mind. I concluded that the poor laundry man, though sitting still, was deeply engrossed in misery. He was in a deep sorrow, and his mind lost its balance. In that same state, he became still without knowing where he was. इतना वो engrossed हो गया था ना उस misery में, दुख में, इतने deep दुख में वो पड़ गया, उसमें डूब गया कि उसका mind हिल गया, उसका balance ही खराब हो गया, उसको पता ही नहीं था वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है. In samadhi, the mind is consciously led to higher dimension of awareness. The aspirants who try to attain samadhi without purification of mind are disappointed because such an impure mind creates obstacles in attaining the state. Samadhi is the result of conscious and controlled effort. It's a state of transcendent consciousness. Worry contracts the mind. ये तो हमने बार बार सीखा. मेडिटेशन एक्सपैंड करती है, वरी कंट्रैक्ट करती है. While meditation expands, it expansion of individual consciousness and union with the transcendent consciousness is called samadhi. तो मेडिटेशन और वरी में बहुत फर्क है. तो मेडिटेशन मीन्स जो हमने सीखा है गुरु जी से, पाठ में बैठना. ध्यान मतलब अपने ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि बहुत 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 घंटे ध्यान में बैठना. ध्यान आप कुछ पल भी शब्द बानी लगा के आंखें बंद करके बैठ सकते हैं और अपने आप ही. और हमें गुरुजी के साथ ऐसा नहीं है कि माइंड पहले प्योरीफाई करना है, इधर क्या होता है, इधर उल्टा होता है. आप ध्यान में बैठेंगे, गुरबानी लगाएंगे, आपका माइंड अपने आप धीरे 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 प्योरीफाई होने लगेगा. So Guruji has not kept any kind of condition that you got to indulge in some kind of practices. You got to purify first and then you can sit. Now here's other way around. When you start sitting in gratitude and listen to Gurbani, gradually by you start towards the automatically you become purified and you start treading on the path of purification. कहते who was the other Gopinath? ये हमारा next chapter है. Swami ji कहते I was staying on the other side of the Ganges, 6 miles from the city of Kanpur. I lived in a garden of a bank of the river. By a bank of the river during those days, I didn't care for anything of the world. I never went to the city, but many people wanted to see me. They would come with fruit and sit before me. In order to avoid that, I used to keep some malas. तो कहते मैं अपने पास माला रख लेता था ताकि लोग मुझे तंग ना करे, avoid करे. And when anyone came, I would say, first sit down and repeat this mantra 2,000 times, and then we will talk. Oh, what a clever way of keeping people busy and then keeping them at bay. तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा उपाय सोचा. कहते जब मैं गेंजिस के पास सिटी ऑफ कानपुर में 6 miles away from city of कानपुर वहां रह रहा था, तो आई लिव्ड इन अ गार्डन बाय बैंक ऑफ द रिवर. कहते उस टाइम मुझे कोई दुनियावी कोई मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं था. मैं शहर भी नहीं जाता था, पर लोग बिल्कुल उमड़ पड़ते थे मुझे मिलने के लिए. तो कोई फल लाता था, मेरे पास बैठ जाता. तो मैंने क्या सोचा, ये माला पकड़ो, 2000 बारी मंत्र बोलो, और जब तुम्हें फ्री हो जाओ month, then we will talk. Obviously it would take a lot of time. Okay, most of my visitors would leave the malas and quietly depart. उसको सुने ये हमारे is not our cup of tea, ये हमारे बस की बात नहीं है, so better leave the mala and just go. Okay, there was a man called Gopinath who was treasurer of the Reserve Bank of India at Kanpur. He came with 4 people one afternoon. तो गोपीनाथ एक आए अपने 4 लोगों के साथ. कहते they sat down and started chanting. They became so engrossed in chanting that the time slipped by unnoticed. At 9 o'clock in the evening, he suddenly opened his eyes and said something very terrible has happened. तो गोपीनाथ जी वहां पर बैठ के वो 4 लोगों के साथ, तो 9 बजे रात के, तो उन्होंने बोला भी मेरे साथ बहुत कुछ अनोखी चीज हुई है, terrible. Everyone asked what is it? He said my niece was to get married at 7 o'clock tonight. मेरी तो नीस की शादी थी 7 बजे. All the ornaments for the marriage ceremony are locked in my safe. सारे उसके जवाहरात वो तो मेरे सेफ में है. I have the only key with me here. Swami ji, what have you done to me? उन्होंने बोला स्वामी जी आपने हमें किस चीजों में लगा लिया. I replied, I haven't done anything. The atmosphere does that to you. स्वामी जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो करता है. It happens to everyone who comes here. You relax and forget the world's problem. You experience and enjoy divinity. Why you worried?
but the ornaments and jewelry which I have to give them are in my safe. I said, look, did you really forget yourself in chanting today? He said, that's why I'm still here. तो स्वामी जी कहते हैं ये जगह ऐसी है, सब भूल जाते हैं, और देखो तुमने वाकई अपने आप को बिल्कुल ही, तुमने वाकई तुम सब चीजों को भूल गए थे ना। तो कहते तभी तो मैं इधर हूँ। देन डोंट वरी, स्वामी जी कहते डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। इफ समथिंग बैड कैन हैपन बिकॉज ऑफ चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम, लेट इट हैपन, समथिंग वर्स वुड हैपन विदाउट इट। स्वामी जी ने बहुत अच्छी उनको राय दी। कहते ईश्वर तुम्हारी सब सिचुएशन को संभालेंगे। कहते अगर ईश्वर का नाम लेने से कुछ बुरा होना है तो होने दो। कहते इससे बदतर भी हो सकता था विदाउट इट। अगर नाम लेने से बुरा हो सकता है तो नहीं लोगे तो सोचो क्या होना था। This is what he meant. They got into the horse cart and quickly returned to the city. When he arrived, he anxiously asked what had happened. The people, they were confused by his concern. They said, what is the matter with you? The ceremony is over. Everything is fine. He said, I was on the other side of Ganges and had my keys with me. What about the ornaments? तो ये देखिए क्या करिश्मा होने वाला है। हॉर्स कार्ट में बैठ के सिटी की तरफ गए और लोगों से पूछा भाई कैसे सब कुछ हुआ। तो लोग कहते, लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्यों पूछ रहा है सब कुछ कैसे हुआ। वो कहते क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, सेरेमनी तो खत्म हो गई, बहुत अच्छी हुई है। कहते नहीं मैं तो उस पार था, और वो जवाहरात का क्या हुआ। तो लोग कहते यू गेव द ऑर्नामेंट्स, हैव यू लॉस्ट योर मेमोरी। तो लोग कहते क्या बात कर रहे हैं, आप ही ने तो दिए, आपने अपनी याददाश्त खो दी है। His wife came and said, you presented the ornaments 10 minutes before the ceremony. Now the marriage party is over and everyone is taking his food. तो देखिए कहां पर वो ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो कहां ईश्वर ने उन्हीं को दोबारा से जिस तरह भी रूप लेके सारे काम कर दिए। But the 4 people who went with him confirmed that he was with me chanting. They said, either you are fools or we are fools. They were quite disturbed because they could not reconcile their reports with their own memories. Gopinath completely lost his mental equilibrium. तो गोपीनाथ जी तो पागल हो गए, भी हुआ कैसे, मैं उधर था तो यहाँ पर किसने दे दिए। He said, I'm Gopinath, but who was that Gopinath who came here? When he went to the office the next day, he wouldn't talk to anyone except to ask one question. He would say, I'm only one Gopinath. Can you tell me who that was? For 3 years, he was obsessed. He had to resign from his job because of it. तो बिल्कुल ही जैसे पागल ही हो गए थे। His wife came to see me and I couldn't help. I asked, does he speak with you? She said, yes, but all the time he asked, tell me, honey, who was the other Gopinath? Did he look exactly like me? After this incident, many people came running to me saying, you are a sage of great miracles. I said, you are praising me for nothing. Neither I nor they knew what had happened, and really I didn't know how it had happened. तो उनके जैसे लोग गए ना, उनके स्वामी रामा जी को भी पूछा और उनकी वाइफ ने भी पूछा। his wife came to me and I couldn't help. तो जब आई उसकी वाइफ उनके पास आई, स्वामी रामा जी में तुमसे बात करता है? तो वो कहते हाँ करता है, पर वो मुझे हमेशा मुझसे यही पूछते हैं वो गोपीनाथ कौन था जो मेरे जैसे लगते थे। तो स्वामी जी कहते later I asked my master, मैंने अपने master को finally पूछा what was it? My master said that he was fully aware of this fact, that it was possible that one of the sages from a tradition helped Gopinath because he was fully absorbed in chanting God's name. तो Himalayan masters की power देखिए। जो मास्टर के पास के मास्टर कहते जो हमारी ट्रेडिशन के वन ऑफ द सेजेस है ना, उनमें से एक ने गोपीनाथ जी का रूप लेके गोपीनाथ जी की मदद की। क्यों? क्योंकि गोपीनाथ जी वाज फुली इमर्स्ड इन टेकिंग गॉड्स नेम। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब देखिए गुरु जी बहुत बारी ऐसे सत्संग है जब गुरु जी ने कई बारी किसी को अपने पास रोक लेना, वो सरेंडर देखते थे। अगर वो उनका सरेंडर सही है, कई बारी तो ऐसे हैं गुरु जी ने खुद उनके रूप लेके काम किए हैं। तो लोगों ने कहना नहीं नहीं आप ही तो इधर थे, आप तो इधर थे, आप ही तो सब कुछ कर रहे थे। तो ऐसे बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ गुरु जी ने खुद वो फॉर्म लेके अपने भक्तों के काम किए हैं। Throughout my life, it has been my personal experience that sages are kind and generous in guiding and protecting the devotees of God. तो देखिए sages कितने kind हैं, कितने benevolent हैं, कितने generous हैं। वो खुद गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हमारी जो devotee की कोई भी उसको जो भी डिग्निटी पे कोई बात आती है या उनके भविष्य को लेके या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कोई बात आती है, तो वो बहुत उनका ख्याल रखते हैं। They are so kind-hearted. As far as my experiences go, a sage can live in the Himalayas, yet
can travel and project himself in any part of the world. ये तो autobiography of योगी में भी है ना. आप कहीं चाहे वो हिमालयस में बैठे हों, कहते वो कहीं भी travel कर सकते हैं, कहीं भी project कर सकते हैं अपने आप को. इतनी शक्ति होती है, पर वो हमेशा इन चीजों को अच्छे कार्य के लिए use करते हैं. They don't display their powers. So I got 5 minutes. I'm going to finish this new chapter, an experience with a psychic. ये छोटा सा ही है. तो स्वामी जी बता रहे हैं उनका एक्सपीरियंस एक साइकिक के साथ कैसे हुआ है. स्वामी जी कहते हैं, on our way to Rishikesh in 1973, we stayed in one of the hotels at New Delhi. There I met Dr. Rodolphe Valentine, a psychiatrist and former professor of a medical school in the United States. He had recently come from touring the countries of the Middle East via Pakistan. Dr. Valentine started telling me about an experience he had at Connaught Place, which is a famous shopping center in New Delhi. A stranger had called him by name and then abruptly told him the name of his girlfriend in England. तो स्वामी जी उन डॉक्टर वैलेंटाइन के बारे में बता रहे हैं ना कि एक्सपीरियंस क्या हुआ है. वो साइकेट्रिस्ट थे ना. No, okay. Dr. Valentine started telling me about an experience he had at Connaught Place. No, Dr. Rodolphe Valentine was a psychiatrist. Okay, so वहां पर क्या हुआ, डॉक्टर Valentine जो Connaught Place में घूम रहे थे, उन्होंने बोला मुझे एक स्ट्रेंजर ने मेरा नाम लिया abruptly और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता दिया. कहते the doctor said, how did you know these things? He said, you were born on such and such date and your grandfather's name is such and such. Then the man told him something very personal which no one except Dr. Valentine knew. तो उस आदमी ने ऐसी चीजें बताई जो किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ डॉक्टर Valentine को पता था. The doctor thought, this is the person for whom I have come to India. The man said, sir, give me $5, and the doctor obliged. The man was looking here and there because he was afraid the police might see him. If the police had known what he was about, they would have arrested him. He said, stay here, I will come right back. The doctor waited there for half an hour, but the man did not return. Dr. Valentine ने मुझे कहा, Swamiji, he was a great man. I asked, what did he do? क्या किया था उसने? He answered, he told me all those personal things about myself, although I was a complete stranger. कि उसने मेरे बारे में ऐसी बातें की जो सिर्फ मुझे पता थी. I replied, didn't you already know these things? बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने कही. तो कौन सी बड़ी बात है, उसने तुम्हें ऐसी कुछ चीज बता दी जो तुम्हें पता थी. क्या तुम्हें पहले नहीं पता थी? If he hadn't told you, then what a big thing did he do? If somebody knows what you are thinking, then you obviously already knew it. Then you obviously already know it too. This knowledge doesn't improve you in any way. स्वामी जी ने बहुत ठीक बात की. अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज बताता भी, हाँ तुम क्या सोच रहे हो, तो कहते वो ना भी बता, तब तुम्हें तो पता ही है ना तुम क्या सोच रहे हो. This ability may amaze you for some time, but it cannot help anyone in self growth. इससे self growth नहीं होने वाली है. कहते fakes like the one Dr. Valentine encountered, जिस तरह Dr. Valentine का encounter हुआ एक fake आदमी के साथ, who was just telling what he was thinking about and all that. They are often found disguised as sadhus at Connaught Place. वो साधु का gyar पहन के, they camouflage themselves and just show their sadhu Connaught Place में घूमते हैं, telling about someone's past and predicting the future. कहते they learn such tricks just to make the living. Naive tourists mistake them for great sages. Such tourists never reach the places where the real sages are. These pretenders, they are kind of imposters. These pretenders give a bad name to spirituality and to spiritual people. Dr. Valentine then started traveling with us. When we left India, he stayed at Rishikesh and in other parts of India for several months, visiting the schools of Indian medicine. He returned to the United States to join us, and he's now conducting and directing the Institute's Combined Therapy program. तो जिस तरह इसने बताया है, बिल्कुल है. बहुत बारी हम जब जाते भी हैं रास्ते में, हमें कोई ऐसा मिल जाता है भी, तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारे भविष्य में ये होगा, ये तुम्हारे पास ये है. तो sometimes we really get absorbed and charmed, and we get lured by what they are saying. वो तो हमें भी पता ही हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, या क्या होने वाला है, क्या सोचे, इसमें कौन सी बड़ी बात है. कहते जो रियल सेजेस होते हैं वो इन चीजों से परे होते हैं. इन चीजों से कभी भी कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं होने वाली होती है. So one should not get into these things,
जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे महात्मा और सेजिस होते हैं, उनका उनका इन चीजों से लेना देना कुछ नहीं होता है। और ऐसे लोग बहुत, इनके लिए बहुत इजी होता है, वो ऐसे रोब और रोब पहन के थोड़े से ट्रिक सीख लेते हैं, बिकॉज इनिशियली किसी का फेथ बिल्ड करने के लिए थोड़ी चीजें बता देते हैं, एंड वी गेट एनेबर्ड। बट ये चीज बहुत है, इन चीजों के कारण ही कई बार जो सच्चे साधु भी होते हैं उनको लोग नहीं मानते हैं। वही गुरुजी कहते हैं ना, पखंड बहुत हैगा है, तो कई बारी जो सच्चे ਨੂੰ भी नहीं कोई पहचान पाता। तो ये तो चीज बहुत है, बिकॉज लॉट ऑफ फ्रॉडस्टर्स एंड लॉट ऑफ इम्पोस्टर्स आर रोमिंग, तो उसके कारण ही इन चीजों से बहुत डर लगता है। बट यस, वही चीज है, ब्लाइंडली कभी किसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, इन चीजों से इनामर नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील टू समबडी टू प्रिडिक्ट समबडीज फ्यूचर और टू जस्ट से what so and so person was thinking. So thank you, thank you, thank you, thank you, Guruji, for this beautiful reading. आपने इस किताब के जरिए ऐसी ऐसी चीजें, चाहे कोई घोरी बाबा हो, किसी भी तरह की रिद्धि सिद्धियों वाले बाबा जी हो, या रियल जो अपने रियल बाबाज भी हमने इसमें देखे हैं, जो जिनकी सच्ची आस्था रही है और जिनका कोई दुनियावी चीजों से या कोई भी फेम से कोई लेना देना नहीं है। और जो स्वामी रामा जी के बेंगोली बाबा मास्टर इज लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी जेन्युइन, वन ऑफ द जेन्युइन मास्टर्स one could ever come across. So thank you, Swami Ramaji. It's not only your journey. You are, every day you take us, in your journey, and we feel as if we are really visualizing what had happened with you, and you're giving us glimpse to the Himalayan masters, which wouldn't have been possible if we were not reading here with lovely Sangat. Thank you, Guruji. Thank you, Ektaji Shilpiji, for this beautiful, beautiful reading, and just forgive me for making so many mistakes. Thank you. Thank you, Auntie. Thank you, Sangat ji. Jai Guruji. Shukrana Guruji.